Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Oxford Learning. Today I am going to start a series of computer science with Alice, and today I am starting the chapter number 5, class 6, and it's Microsoft Word. Before starting my lecture on my video, I would love to share some important points with you all. This video, the purpose of making this video is to help the teachers and students to enhance the computer technologies and to use the various methodologies of teaching and learning. So I'm very excited about this series, and I promise you I will make wonderful videos for you in future, inshallah. So let's start our chapter number 5 today. It's class 6, computer science with Alan. Let's learn computer with me. Microsoft Word is chapter number 5 in class 6. Class 6 की ये बुक है और इसमें चैप्टर नंबर 5 है Microsoft Word. As we always think about that, the Microsoft Word is a simple documentation, and we use this program to just write the applications and type the applications. Always we have the same views about the software, but actually when I saw the book of class 6, I found so many other features, as I was using Microsoft Word for many purposes, like making the brochures, making the pamphlets, and creating so many other things like book covers, like cards, everything you can do through the Microsoft Word. So the first thing is हमें इसको इस अपने सिलेबस को कैसे कवर करना है और किस तरह से हाउ कैन यू प्रिपेयर योर स्टूडेंट्स फॉर द एग्जामिनेशन. आपने अगर आपको लगता है कि यू हैव अ शॉर्ट टाइम और आपको बहुत सारा काम करना है, तो यू नीड टू गेट द स्मार्ट syllabus coverage way. I'm going to share the video regarding the smart syllabus coverage की एक मैंने वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह ताला I'm going to upload before the midterm. किस तरह से आप जो है वो अपने बच्चों को 100% प्रिपरेशन करा सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन के वो बहुत अच्छे से मार्क्स भी जो है उनको मिले, और उसके अलावा आपका रिजल्ट अच्छा है. सेकेंडली ये होगा कि उनके कॉन्सेप्चुअल जो थीम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. सो मैं आई एम यूजिंग द बोथ मीडियम, एज यू नो आई ऑलवेज यूज द बोथ मीडियम्स फॉर एक्सप्लेनेशन, ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मेरी क्लास में भी होते हैं, दे फील shy and they feel difficult when they attend the lecture, कि उनको लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, तो एक्सप्लेन जो है वो उर्दू में होना चाहिए. बट आई ऑलवेज प्रेफर कि जो दोनों लैंग्वेजेस है ना आपको उनमें करना चाहिए, वो इस तरह से होना चाहिए. बेसिकली तो आपको यू शुड एक्सप्लेन इन इंग्लिश बिकॉज इट्स कम्प्लीटली इंग्लिश सब्जेक्ट, एंड व्हेन यू मूव अहेड लाइक यू मूव टुवर्ड्स द प्रोग्रामिंग, उस वक्त आपकी जो है वो उर्दू और कोई भी और लैंग्वेज आपके काम नहीं आएगी. यू नीड टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द कमांड्स. बेसिकली कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन लैंग्वेजेस, जिसको समझने के लिए भी आपको सबसे पहले इंग्लिश की ही ज़रूरत होती है. एंड आज का जो दौर है इसमें आपको पता है यू गेट सो मेनी वीडियोस and so many tutorials regarding any program. If you want to be expert in any software, you can get so many tutorials on YouTube. लेकिन जो सबसे important चीज़ है, you should know how to learn English language, क्योंकि अगर आप उसको learn करेंगे you can get the ideas quickly through the tutorials. So we move ahead. ये तो कुछ instructions थी. So we move ahead. किस तरह से हमने जो है वो क्या क्या चीज़ें इसमें करने जा रहे हैं. The first thing is topics we are going to cover. Introduction to MS Word, page number 7 को करने जा रहे हैं. I'm going to explain it. And learning objectives, page number 71. Introduction to Microsoft Windows, page number 72. And important objects of my MS
वर्ड विंडो पेज नंबर 72। मैंने जो है वो पेज नंबर 71 टू टाइम्स लिखा है एंड पेज नंबर 72 जो है वो भी मैंने 2 टाइम्स लिखा है, बिकॉज इसके ऊपर 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लेन करना डिफरेंट स्टाइल्स में ज़रूरी है. सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू start and I'm going to explain in a different way. The first thing is Introduction to MS Word, page number 71. So I show you first of all how the page number 71 looks. ये देखिए, this is the Microsoft Word chapter number 5. Here is a little bit explanation about the previous chapters, that it's not about the previous chapter of this book. They're talking about the previous versions, previous classes, because they are explaining here in previous chapter we have learned how to implement a simple story in Alice. Means in the previous classes जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा था, दैट वाज द सिंपलेस्ट वे टू मेकिंग डॉक्यूमेंट, टू मेक डॉक्यूमेंट, टू क्रिएट डॉक्यूमेंट. और उसमें ये होता था कि आप सिंपली आपको बताते थे कि हाउ यू कैन सेव योर फाइल एंड हाउ यू कैन ओपन योर फाइल, ओपन योर एग्जिस्टिंग फाइल, किस तरह से हाउ कैन यू टेक द ब्लैंक पेज, सिंपल. और नाउ द वर्जन्स आर चेंज, इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड फॉर द बिगिनर्स. जो बच्चे नए आते हैं उनके लिए भी डिफ़िकल्ट होता है, एंड डेफिनेटली द टीचर फील वेरी डिफ़िकल्ट व्हेन दे सी द न्यू, यू कैन से द न्यू स्क्रीन ऑफ योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. तो आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इजी वर्ड्स में बताऊंगी आपको. कि फर्स्ट थिंग ये होती है, यू मस्ट एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. It's about the Microsoft Word. When I asked a question about the Microsoft, students were unaware about the Microsoft. They said it's a program. तो सबसे पहले एक्सप्लेन करना ये ज़रूरी है कि Microsoft क्यों है. Word is a program and Microsoft is an organization. जिसने ये programs develop किए हैं उसको Microsoft कहते हैं. और 2 persons are the founder of Microsoft. One is a Paul Allen and the second is a Bill Gates. तो Microsoft is a company जिसने ये तमाम प्रोग्राम बनाए हैं. Keep in your mind this thing, then you can move ahead. हमें if you don't know the title, you can't move ahead properly, because everything in the title, everything, all the purposes are hidden in the title. So that's why we need to know about the title and then we should move ahead. So the thing is, it's time means उन्होंने बताया है कि the previous chapter हमने जो चीज़ की थी that was simple, but now this is time to do some professional works. क्योंकि आज competition इतना tough हो चुका है आपके इंटरनेट पे भी, आपकी आईटी की वर्ल्ड में एक इनकलाब आ चुका है. क्योंकि तमाम काम, हमारा जितना भी काम, हम जितना भी अवॉइड कर लें, हम चाहें कि हम अपना मैनुअल काम करें, लेकिन ये हो नहीं सकता, बिकॉज एवरीथिंग इज on the computer system, and if you do it, उसके बाद आप you will never come back toward the manual work. So that's why this is most important thing, to know the features of that program. First thing is it provides the stories to write story. If you write story, this version provides you the professional way to write. इसके बाद there are many word processing programs that you choose to write your story. However, we will use Microsoft Word as our word processor because it is widely used in offices, everywhere. Microsoft Word is used to create so many things, like, because it provides everything. It provides to add the options to provide options to add pictures, animations, and everything you can apply as you were using in the Microsoft PowerPoint and other programs. तो आज जो हम चीज़ करने जा रहे हैं वो हमने इसको एक प्रोफेशनल लुक के तौर पे इसको जो है वो प्रेजेंट करना है मैंने आपके सामने, और आपने इसको प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट करना है. उसके बाद you can create so many amazing things through the Microsoft Word. So Microsoft Word is a powerful tool. First of all, it's tool. Tool mean a weapon. Weapon क्या है ऐसा, या you can't say it's a weapon. You just imagine you have a brush. आपके पास एक brush and you have paint. Paint is your tool and brush is also a very strong tool. You can just draw. You can just paint something
If you are a good painter, you can do amazing job. Secondly, if you have pen and you know how to write something amazing, so you can write down essays, you can write an article. So that's why we always say the pen is this powerful tool. The same case with the Microsoft Word. Microsoft Word is also a powerful tool to do something amazing. It provides a different and advanced feature for formatting our text. What is formatting? Formatting के बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगी. Formatting means to change the look and appearance of your text. Like एक simple example है हमारे पास. We have manual work. Like I am going to write down an essay on Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah in my register. It's really a boring thing when I use the two colors, like my one for my heading and the second for the rest of the content. To write something about that content, I will use any pointer, any pen, and any ballpoint, right? But if the same essay you are going to write in the Microsoft Word, you can apply the pictures related to the incidents. Like you can add the pictures of Qaid-e-Azam or Allama Iqbal. Agar if you are writing, जो भी आप कर रहे हो, like we are writing the essay on Qaid-e-Azam, you can just add the pictures related to the events. This is amazing thing. And इसमें अगर आप देखोगे 110% जो है वो changes आती है. Like you will 110% prefer the Microsoft Word instead of the manual work. No one will prefer the manual work in this way because we always want perfection. We always want to make something great. So Microsoft Word help us to do and to perform such amazing tasks. Then the next thing is inserting images, because if you have something in your computer system, because we can download so many images related to our topic, you can add easily in Microsoft Word document. Organizing means to show something in a proper way. Organization, right? Organization, a step by step procedure, means if you are doing something, you can add so many headings in a proper way, and then you can explain your theme. And then aligning. Aligning means to adjust the position of text, like center, right, left, justify. All the positions are called your alignments. And much more, means it provides many more other things. So everything in this paragraph, आप अगर इसको देखेंगे तो इस प्रोग्राम की जितनी तमाम आगे चीज़ें हम करने जा रहे हैं, all are summarized in these two paragraphs. All of this help us to produce a well-written professional document that illustrates the Ali story from beginning to end. अगर इन तमाम tools को we use properly, we can create amazing things. So this is about the page number 71 part 1. इस paragraph में they told you कि आप if you want to make a presentation on Microsoft Word, that what is Microsoft Word, you can make the 10 to 20 slides from these two paragraphs. If you have the knowledge, if you have the skills to write some important headings, you can make so many things, and you can definitely create the 20 slides from only from these two paragraphs. So we move ahead. The next thing is here I can see learning objectives, means हम अगर if we do Microsoft Word in such a way as I told you, which learning objectives, हम तमाम वो चीज़ें कौन सी हमें हासिल हो सकती हैं आफ्टर बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर. मतलब मेरे स्टूडेंट्स और टीचर्स, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स भी, समटाइम्स टीचर्स का भी इतना नॉलेज नहीं होता जितना स्टूडेंट्स का होता है, बिकॉज दे आर यूजिंग कॉन्टिन्यूसली द कंप्यूटर सिस्टम एंड दे नो द वेरी स्मॉलेस्ट पॉइंट्स ऑफ द program. So that's why sometimes teacher के mind से वो चीज़ skip भी हो जाती है, but the student know how to use the program. So by the end of this chapter you will be able to, students or teacher क्या कर सकते हैं after reading this chapter, after practicing this chapter, work on Microsoft document, means you can create an amazing document
on Microsoft Word by adding all the elements. Then you can add things, you can edit things. Like if you have something ready-made in front of you, you can add it, you can change that thing, and you can apply according to your need or taste. Copy and paste to make more things without writing is called copy. Like copy and paste somewhere else. And format text means you can change the appearance and look of your text from heading to from till end of your document. Then work with paragraph and indentation. Now, what is the difference between paragraph setting and what is indentation? हमें इंडेंटेशन का मतलब हमेशा यही लगता है कि द सेटिंग ऑफ एंड द पोजीशन ऑफ योर टेक्स्ट, बट इट डजंट मीन. इसका मतलब ये होता है कि यू एडजस्ट द स्पेसिंग फ्रॉम द लेफ्ट राइट. दिस इज इंडेंटेशन, कि आपका पैराग्राफ एक्यूरेट फॉर्म में आपके सामने आ जाए, आप उसको एक प्रोफेशनल पैराग्राफ की लुक के तौर पे आप उसको प्रेजेंट कर सके. इंसर्ट इंसर्ट रीसाइज पोजीशन एंड कैप्शन इमेज. कोई भी इमेज इंसर्ट करते हैं, उस इमेज को इलस्ट्रेट करने के लिए, टू डिस्क्राइब दैट इमेज, यू ऐड एवरीथिंग. लाइक यू कैन रीसाइज इट. if you want to maximize that image, you can do it by clicking on that option, resize option. Position, where you want to put that, between the text, behind the text, in front of text, wherever you want to put that, you can choose the position as well. And caption, caption means to highlight the topic of that picture you are going to insert it. Create shapes and insert text in them. अब लोगों को नॉर्मली ये पता नहीं होता है कि what is the difference between shapes and images. Images are your pictures and shapes are your diagrams, like circle और different तरह की star हो गया, lines, different kinds of lines, square, आपका कुछ भी ऐसी शेप डिफरेंट, मतलब जितनी भी शेप्स आपको नज़र आ रही होंगी, यू कैन ऐड. और शेप के अंदर यू कैन राइट एनीथिंग and inserting text in them. Not only shape, you can write something in it. This is also the very powerful feature of the Microsoft Word. The last one is add cover pages, table of content pages, and page number. You can make the high resoluted book covers by adding the picture. We will make it inshallah. आगे जाके हम करेंगे इसको. अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं कि आगे जो है. मैंने ये देखिए, अब मेरे पास है पहला फीचर मैंने जो ऐड किया था, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट. And now I explain all the points one by one with practical. Like the first one is वर्क ऑन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट. तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि वर्क ऑन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है. हियर आई हैव ओपन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस and you can see this is the Microsoft Word page and the area you can write. जो सबसे पहली जो चीज़ है ये हमारा डॉक्यूमेंट है. Here you can do whatever you want to do. Like आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं. You can write something. You can create applications and everything by using this. And here you can see so many menus. और अभी तो ये कम हो गए हैं, बट इन प्रीवियस वर्जन्स बहुत ज़्यादा मेन्यूज़ के साथ काम किया जाता है. बट राइट नाउ वी हैव द शॉर्टकट टूल्स एंड वी कैन डू work easily through all these shortcut to these tools provide you many options to create amazing documents. So that's why ये रूलर है आपका, जिससे आप स्केलिंग कर सकते हैं कि फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू स्टार्ट द राइटिंग एरिया एंड वेयर यू आर फिनिशिंग द एरिया. सो और इसके अलावा साथ साथ ये तमाम ऑप्शंस जैसे जैसे आती जाएंगी आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. ये हमारा है वर्ड का डॉक्यूमेंट, जो कि एक हमारा फीचर है वर्ड. Then add, edit, copy, paste and format text. तो सबसे पहले हम add करते हैं. I tell you how do we add things like this. I'm going to add Pakistan as my country. This is adding text. Whatever you want to add, you can do it. And here is a formatting. Here is formatting. ये मैंने यहाँ से select किया. The selection is also the part of your formatting. Selection is important
thing. If you want to apply anything on the text, you must select your text. If you don't select, you can't apply anything. Like मैं अभी आपको बताती हूँ, without selection I am going to change the size of this line, but I can't do it because select मैंने नहीं किया, 20 नहीं हुआ. अब मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ. सेलेक्ट करने के लिए यू कैन ड्रैग द माउस ओवर द टेक्स्ट, यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस ए मीन्स ऑल, एंड यू कैन चूज द राइटिंग स्टाइल. ये देखिए अब जहाँ जहाँ चीज़ें सेलेक्ट की हुई हैं आपने, इसका साइज स्टाइल चेंज हो जाएगा. इसके बाद आप इसकी राइटिंग चेंज कर लीजिए. यहाँ से जो भी आप करना चाहते हैं यू कैन डू इट. एंड दिस इज़ द फॉर्मेटिंग. फॉर्मेटिंग और एडिटिंग का नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता. देन कॉपी एंड पेस्ट. ये मेरे पास एक सेंटेंस है. आई जस्ट वॉन्ट टू मेक द सेम सेंटेंस विदाउट राइटिंग. आई राइट क्लिक हियर, कॉपी ऑप्शन, एंड अब कॉपी के बाद जहाँ मैं पेस्ट करना चाहती हूँ आई विल राइट क्लिक हियर पेस्ट. और जितनी बार भी मुझे चाहिए होगा आई कैन डू इट. और विदाउट टाइपिंग, विदाउट राइटिंग, आई कैन गेट सो मेनी कॉपीज ऑफ अ थिंग एज वी यूज़ द फोटो कॉपियर. किसी एक पेज की हम बहुत सारी कॉपीज़ करा लेते हैं, ठीक है. तो वो चीज़ जो है वी कैन यूज़ दिस. अब विच कीज़ वी यूज़ टू कॉपी एंड पेस्ट, आई टेल यू. आई राइट हियर कंट्रोल जो है हमारा CTRL. लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ टेक्स्ट ताकि आपको प्रोमिनेंट हो सके. CTRL के साथ आप प्रेस करेंगे C फॉर कॉपी, फॉर कॉपी टेक्स्ट. ओके, C फॉर कॉपी. तो हम अगर V करेंगे यहाँ पे, हम CTRL प्लस V फॉर पेस्ट ऑप्शन, पेस्ट ऑप्शन, राइट. तो ये दो शॉर्टकट कीज़ हैं. और वी का मैं हमेशा से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ कि वाई वी यूज़ द वी ऑप्शन फॉर पेस्ट. बिकॉज हम जब कॉपी करते हैं तो वी यूज़ द कंट्रोल प्लस C, एंड द कॉपी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट लेटर ऑफ कॉपी इज़ C. लेकिन एक्चुअली होता ये है कि हमारे बहुत सारे और जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम्स में यूज़ हो रहे होते हैं. सो दैट्स वाई वी नीड टू डू दिस. हम अभी क्या करते हैं यहाँ पे, पेस्ट जो है हमारा, इसलिए हम अगर हम कंट्रोल प्लस P करते हैं तो P इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग. सो दैट्स वाई वी यूज़ द V. और V को मैं सिंपल सी एक बात बताती हूँ, यू ऑलवेज जस्ट कीप इन योर माइंड, यू विल नेवर फॉरगेट इट. मेक द hints of things. If the things are difficult for you, just make a little hint. The meaning of the thing, the meaning of the difficult word is hidden in that सेम वर्ड. हमेशा उसी वर्ड में छुपा हुआ होता है. वी का दोनों चीज़ें बराबर हैं. लाइक इसके दोनों अगर एंगल्स देखेंगे तो दोनों बराबर होते हैं. मीन्स पहला एंगल अगर हम यहाँ रखते हैं तो नेक्स्ट वाला भी उसका बराबर होगा. ये इस तरह से, ये देखें वी. तो मीन इसका मतलब ये है कि ये सेम इस तरह की चीज़ लेके हमारे पास आ जाए जो हमने कॉपी की है. मीन्स यहाँ से कंट्रोल C से जब कॉपी की, ये हमने कॉपी कर ली, तो आगे वाली नेक्स्ट जो चीज़ है वो भी सेम होनी चाहिए जब हम पेस्ट करेंगे. नो चेंज विल बी अप्लाइड. सो ये हमारी कंट्रोल जो है वो ऑप्शंस आ जाती हैं हमारे पास, कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट एज आई टोल्ड यू. फिर हम चले जाते हैं नेक्स्ट पे, वर्क विद पैराग्राफ एंड इंडेंटेशन. हम कुछ भी यहाँ पे अगर पैराग्राफ लिखते हैं तो ये हम पैराग्राफ टाइप करते हैं तो पैराग्राफ से रिलेटेड हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी. यही समझे हमारे पास पैराग्राफ है. तो हम इसकी अलाइनमेंट यहाँ सेंटर में कर देते हैं और ये हमारी स्पेसिंग सेट हो जाती है, इंडेंटेशन सेट हो जाती है. ये तमाम चीज़ें हम पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं टू डू दिस. और इसके अलावा आप अगर यहाँ करते हैं तो आपको इंडेंट स्पेसिंग का एक नज़र आता है. हमने कहाँ से क्लिक किया है, ये पैराग्राफ की साइड पे यू कैन सी अ ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड यू जस्ट क्लिक हियर एंड यू कैन फाइंड आउट इंडेंट एंड स्पेसिंग. लाइक अलाइनमेंट आपने कहाँ करनी है, इसकी सेंटर करनी है, आउटलाइन कहाँ करनी है, लेवल 1 पे लेके जानी है. इंडेंटेशन जो है वो लेफ़्ट से होनी चाहिए इसकी स्पेसिंग, या फिर इसकी राइट से होनी चाहिए. मैंने यहाँ कर दिया कि दोनों की 5-5 होनी चाहिए मेन.
स्पेशल में है फर्स्ट लाइन जो है वो होनी चाहिए, फर्स्ट लाइन से लेके एंड तक होना चाहिए, या फिर सेंटर में पैराग्राफ को एंड करें तो नेक्स्ट वाला नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करें। तो ये तमाम इंडेंटेशन में आ जाती हैं चीज़ें। अब ये देखिए इंडेंटिंग हो गई है हमारी, कि स्पेसिंग हमने सेट कर दी हुई है। एक और चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ, यू कैन एडजस्ट द स्पेस। यहाँ पे यू कैन सी विद अलाइनमेंट एंड ऑप्शन ऑफ रिमूव स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ, यहाँ पे एंड यू कैन एडजस्ट वन। तो ये पैराग्राफ बिल्कुल साथ में एडजस्ट हो जाएगा एज पर साइज जो आपने बताया। तो ये हमारा पैराग्राफ, इसकी इंडेंटिंग क्या है, टू एडजस्ट द स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर द टेक्स्ट, वो हम इसकी थ्रू कर सकते हैं। दिस इज द मेन थिंग। देन इंसर्ट रीसाइज एंड कैप्शन इमेजेस। अभी इमेजेस क्या है हमारे पास, इमेजेस के बारे में आपको मैं बताती हूँ। हमारे पास कोई भी ऐसी पिक्चर जो पड़ी है, लाइक मैं अब इसको ख़त्म करती हूँ यहाँ, इंसर्ट करेंगे एंड पिक्चर, यहाँ से चले जाएंगे हम। और मेरे पास डेफिनेटली आई हैव मैनी पिक्चर्स ऑन माई डेस्कटॉप एंड आई कैन गेट इट। ये मैंने एक एनिमल पे वीडियो बनाई थी तो उसका तमाम डाटा पड़ा हुआ है, बट इट्स रियली पेनफुल, सो दैट्स व्हाई आई नेवर यूज दीज पिक्चर्स। आई एम गोइंग टू डिलीट बिकॉज आई कांट सी। हेयर इज अ पिक्चर, ये एक पिक्चर है, इसको मैंने रीसाइज करना है। बिफोर resizing you should apply the text wrapping option from here, behind the text, in front of text, tight, square, ये तमाम चीज़ें। अब जब आप ये अप्लाई करते हैं तो आप इसका साइज़ बड़ा छोटा सब कुछ कर सकते हैं, और आप इसको यहाँ पे लेके जा सकते हैं, आप इसको सेंटर में लेके जा सकते हैं। आप जहाँ पे भी चाहें आप इसको एरो कीज के साथ भी मूव कर सकते हैं। बट इफ़ यू डोंट अप्लाई द टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन, इट्स रियली डिफिकल्ट to resize the picture, because picture is not free before text wrapping, so that's why. Now you can add the heading like animal care, तो इसको तमाम को बड़ा कर लें आप F3 के साथ। ये हम इसको सेंटर में ले आए तो ये हमारी कैप्शन बन जाती है, ये हमारा टाइटल बन जाता है पिक्चर का। और यू कैन इंक्रीज द साइज फ्रॉम हियर। तो मैं यहाँ से इसका साइज़ ऐसे करती हूँ और मैं इसको थोड़ा टैब की से सेंटर में ले जाती हूँ उसको। लाइक इस पिक्चर आ गई है, पिक्चर को थोड़ा नीचे करते हैं, ये यहाँ। तो इस मेथड से यू कैन इंसर्ट इमेज एंड कैप्शन रीसाइज इमेज कर सकते हैं। क्रिएट शेप्स एंड इंसर्ट टेक्स्ट देम। देन ऑप्शन इज क्रिएट शेप एंड इंसर्ट टेक्स्ट इन देम। किस तरह से आप कर सकते हैं, शेप के बारे में मैं बताती हूँ आपको। लाइक दिस। अब यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं तो यहाँ शेप्स की ऑप्शन आ जाती हैं। यू कैन सी सो मेनी बॉक्सेस, सर्कल्स, स्माइलीज एंड सो मेनी अदर थिंग्स। जैसे ही आप कोई इमेज बनाएंगे, ये वाला मतलब आप कोई भी जो है वो शेप इंसर्ट करते हो तो आपके पास कलरफुल बॉक्सेस आ जाते हैं कि आप कौन सा वाला कलर इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। जो भी आप बनाना चाहेंगे वो इस तरह से आपकी शेप जो है ना उसको इस तरह से कलरफुल बना देगा। तो दिस इज़ कॉल्ड शेप। इमेज का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। और इसके बाद सॉरी, इसमें इंसर्टिंग टेक्स्ट, राइट क्लिक ऑन द इमेज, add text and add whatever you want. Like I'm going to write my channel name Oxford Learning. So इसको सिलेक्शन करके आप इसको होम पे चले जाएं और थोड़ी सी राइटिंग चेंज कर लें, इंटरेस्टिंग लाइक इस तरह से बना लें, थोड़ा प्रोमिनेंट कर लें, तो ये चीज़ आपके पास इस तरह से आ जाएगी। यू कैन मेक इट बोल्ड एंड यू कैन जस्ट वाइड द दिस वन, ये इस तरह से। एंड उसके बाद इसको आप सेंटर में लेके जा सकते हैं बाय अलाइनिंग द टेक्स्ट, एंड दिस इज़ द वे। तो ये शेप्स है हमारे पास जो मैंने आपको अभी बताया कि शेप्स किस तरह से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। फिर सबसे जो देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज ऐड कवर पेज, टेबल ऑफ कंटेंट पेज एंड पेज नंबर। ये जो चीज़ है ये कंप्लीट प्रैक्टिकल बताऊंगी मैं आपको कि किस तरह से आप पेज जो है वो उसका कवर बना सकते हैं और
किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें, और किसी बुक का कवर बनाना हो तो हाउ कैन यू मेक इट। सो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। ये हेयर वी रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम दिस पेज, we go to the page layout because the things related to the page are in page layout option. Choose fill effect. मैं जैसे डबल कलर चूज़ करना चाहती हूँ, मैं अपनी बुक का डबल कलर चूज़ करना है, तो I would love to get the colors like this. And the second one is not black, green. I will choose the shading style, which one I would like, this one. And okay, right, here is the title of my book. You can write something here, you can add picture. तो इस तरह से आप colorful books के title भी बना सकते हैं, you can by adding text, by adding shapes. So Microsoft Word provides you the facility to make colorful titles of your books. पेज नंबर 72 पे चले जाते हैं हम लोग। इसके ऊपर आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, और इसमें क्या है, लेट्स एक्सप्लोर द मेन कंपोनेंट्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, दिस हेल्प अस गेट फेमिलियर विद द टूल्स। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो एक विंडो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं कि आपका सबसे पहले तो यू कैन सी द कैप्शन बार वेयर यू कैन सी द डॉक्यूमेंट नंबर 1। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल होती है उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर 1 है, देन पेज है आपका जिसके ऊपर दिस पेज इज़ योर राइटिंग एरिया, and then you can see the different toolbars and menu bars and everything. The highlighted red area define everything, and here are the scales. Scales are used to measure the adjustment or adjust the measurement of your page and everything. Here at the bottom you can see the page numbers and column numbers and your line number, everything it defines. So this is the Microsoft Windows, इसको हम कहते हैं Microsoft Word window। तो ये वाली हमारी विंडो होती है जो कि बहुत ही फ्रेंडली है, एंड इफ़ यू स्पेंड टाइम 2 or 3 days with this window you can get everything, you will be familiar with all the tools and all the components of this window. So ये वाली जो चीज़ें हैं इनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था आपको। The first thing is title bar panel, means it displays the name of your file, name of your document. Then ribbon main menu, it is where you find the most of the tools that you need to create documents. As I told you, the shortcut icons जैसे कि फाइल सेव करने का है, ओपन करने का है, you if you want to change, if you ribbon menu में क्या होता है, if it is where you find the most of the tools that you need to create documents. वो तमाम चीज़ें जो shortcuts बताए हैं मैंने आपको, you just click on the shortcut and you can get and apply the things automatically without searching from the menu bar. And document area means your paper, your document where you are going to write down something, that is your document area. Ruler is, as I told you, ruler is used to adjust the paragraphs margins in a document. पेज नंबर डिफाइन करता है हमारे पेजेस, कितने पेजेस हम यूज़ कर चुके हैं और हमें अभी हम कौन से पेज पे काम कर रहे हैं। तो इट डिफाइंस द number of your page because it has millions, thousands you can say, बहुत सारे पेज हैं, तो हम किस पेज पे काम कर रहे हैं। It is the option, as you know, it shows the things bigger, smaller as you like. So this is all about today's lecture. आई होप कि आपको काफ़ी हद तक इसकी क्लियर हो गया होगा, बिकॉज़ काफ़ी लंबा मैंने बना दिया है, इसलिए कि आप अंडरस्टैंड कर सकें इसको अच्छे तरीके से। आपने एग्ज़ामिनेशन के लिए भी तैयारी करनी है, तो आपके जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते यू कांट मेक द स्मार्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला जो मैं आपको दिखाऊँगी वो होगा थोड़ा सा डिफरेंट, उसमें हम थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क मज़ीद करेंगे। आज भी हमने किया, बट आई ऑल शो यू समथिंग डिफरेंट
पॉडकास्ट और उसमें हम कुछ और काम करेंगे। तो तब तक के लिए ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, सिर्फ इसलिए कि हम अपनी एजुकेशनल सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकें और अपनी आईटी की स्किल्स को इन्हांस कर सकें, अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर सकें, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए आईटी में कोई डिफरेंट काम कर सकें, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, दे कैन डू everything if they get the correct guideline. So thank you so very much and Allah Hafiz, stay blessed.